is the link for the class. You did not get the link to join the class or to watch the recording? What link are you talking about? For the class. For the class, you did not get the link. No, sir. Like today you got the link, right? Yes. This should not happen. See, those who don't know, you have class on every Tuesday and Thursday. At 6:30, I guess, PM KSA. Those who are in India, or you can write, or 9 o'clock, 9 PM Indian time. So if you don't get any link on Tuesday or Thursday, save today's link, okay, Nina? Okay. So you will join on Tuesday and Thursday at the same time, okay, each Tuesday and Thursday, okay? Yes, sir. Okay. So till the last lecture, acha, guys, you need to turn your cameras on. Please turn your cameras on. We'll start the class now. And from till the last lecture, we have been doing streak number 4. And I think we did everything, right? Streak number 4. H2 one angle. ठीक है चलिए. So we are going to do streak number 5 today. Guys, turn the camera on. फिर हम लोग start करेंगे ना. Focus mode तो on है. Camera is a bit slow. Put myself in spotlight. Yeah. Is my screen visible, guys? Tell me. Yes, sir. It is. Yes, sir. Khadija, Rishita. Everyone has their cameras on. Khadija is odd. Khadija, what happened? Khadija is silent. She's not. She doesn't even talk in the class. Okay. Before moving towards 5, 6, 7. Just complete steric numbers, then we will do that. Okay, guys, steric number 5. Steric number is 5. Now in steric number 5, we will start with case 1. Tell me, guys, what will be the case 1? क्या होगा case 1? Rishita, Akib, Abdul Hamid, those who were present in the last lecture, it will be what case 1? We'll have 5 sigma. जी बोलिए. No idea. Case 1 will be 5 sigma. Guys, what happened? Rishita, Abdul Hamid, those who were present in the last lecture, आपको तो बताइए कम से कम. 5 sigma plus 2 LP. 0 LP ना, 0 लोन पेयर. लोन पेयर है Zero Rishita, लोन पेयर. हाँ, 0 लोन पेयर.
अब जो लोग लास्ट क्लास में थे इनको ये सारी चीज समझ में आएगी, अब दोबारा हर चीज नहीं बता सकता ना, ठीक है। 5 sigma, that means we are going to have 5 sigma bond and 0 lone pairs. If you remember, those who were not present in the last lecture, but वो last to last lecture में थे when we were doing steric number, so they must remember at least this part, that steric number I have written two things is equal to number of sigma bond plus number of lone pair also, ठीक है। Those who were not present वो ध्यान से देखे जरा, steric number is also equal to number of sigma bond and number of lone pairs. That is why I can write steric number 5. So 5 sigma plus 0 lone pair will give you steric number 5. In this case, we are going to have AB5. So we have B atoms and there are AB5. ठीक है ना? AB5. Yes. Now, in this case, what I need to do, first say I will have, please see this one. I have a spherical atom. I have a spherical atom like this. ठीक है. To make it more spherical, can I say, I think this will look more spherical. This looks more like sphere now. All of you, please see, don't write anything. You don't have to write all of these things. Okay. Is this clear? Yes or no, please tell me. Here will be your atom. ठीक है ना, यहाँ पे atom होगा. Now, where will be the electrons? Please see. Electrons को हम इस तरह से एक ऊपर एक नीचे कर देते हैं. One will be above like this and the other will be below. है ना? Equal distance होना चाहिए और आपको और कितने रखने हैं? 3 रखने हैं और, so I can have one like this. I hope you can see that this distance, if I talk about a sphere, guys, please listen to this very carefully. If I talk about a sphere, this is the center, this is the center. So this thing will be what? The radius of the sphere, correct, guys? Yes, sir. This one will also be radius, this one will also be radius, this will also be radius, and this will also be radius of the sphere, right? So Yes, all of sir. these will be what? All of these are going to be completely spherical, completely symmetrical. इतना समझ में आया सबको? This will be completely symmetrical. So this is the orientation or the electronic geometry that we are going to get. I'm just going to make it a bit more symmetrically, और जो थोड़ा सा अच्छा दिखे. Please see, I have a molecule here, or a atom here. It will have electron pair above, electron pair below. It will have electron pair 2 on the sides and 1 here. So something like this you will get for the steric number 5. We'll get 5 here like this. Okay. Achha, we saw also one more thing. All of these 3 are lying in one plane. All of these 3 are lying in one plane. Yes or no, please tell me, guys. You have seen that? Yes, Yes, sir. sir. Okay. That means I can say one more thing. Here we have 2 different types of bond. पहले तो इसको देख लेते जरा. What is the electronic geometry? If I join these 3 and I join them like this, can I get a pyramid here? Pyramid Yes, दिखा Yes, सबको? sir. Similarly, you will have a pyramid below, है ना? ऊपर जैसे Yes, pyramid sir. बना, नीचे भी वैसे बन जाएगा ना? देखिए जरा. Those who can't see, ऊपर बना, नीचे भी आप join कर दीजिए इनको, नीचे भी बन जाएगा. All of you got this? Yes or no? Please tell me the 2 pyramids. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. So what we are having, achha, we have 2 pyramids. What is the base of the pyramids? Triangle. Triangle. So this will be trigonal or triangular. Trigonal. And we are having 2 pyramids. That is why bipyramid. Easy name, yes or no? Please tell me. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Trigonal bipyramidal. This is also known as TBP. We call it T. TBP. Okay. Now I will put the atoms. We have 5 atoms. So I will put the atoms here: B, 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 and B. So this molecular shape is also same thing here right now. It is TBP, trigonal bipyramidal. Now see the next thing. The angle between these, and these will be 120 degree. Correct, guys? Yes, Yes, sir. sir. But if you look at these angles, this straight line here, ठीक है, and the one which is in the plane, जैसे आपके पास ये जो 3 है, इसके ऊपर ऐसे करके सीधा सीधा ये खड़ा है. So all of the 3, these, this, and this, all of this will be 90 degree. ये दिख रहा सबको है ना? Yes, sir. ठीक है ना? I hope all of you can see that. So here we have 2 different types of angle. What are the bond angles? Please see, don't write anything. Bond angles.
we have 120 degree and 90 degree. 120 degree and guys 120 degree and 90 degree. degree. माइक ऑफ करके Sir, नहीं how- जा 90 रही degree. है इल्हाम। हाँ जी बताएं। Sir, how did you get 90 degrees? हाँ ठीक है। So ठीक है, Izan, you are thinking something like this ना कि sir, I understand that this will be 90 degree, but this should not be 90 degree, right? Yes, sir. ठीक है, हम आपको दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर भी, ठीक है ना। इफ इट इज बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Can all of you see the new screen now? Yes, sir. Yes, sir. Here we have 5 atoms, ठीक है ना। इसको now I have to actually minimize the energy, तो इसका actual optimized geometry, हाँ ठीक, optimize और होगा। एक सेकेंड, हम भूल गए लगता है क्या डिस्प्ले टू। इसमें अटक गया, एक सेकेंड। I need to take phosphorus. And I have to have proteins. I hope this gets better now. ठीक है, you can have some. अब complete हो गया। Yes, can you see this is the same structure, Izan, और बाकी लोग को भी दिख रहा है? Yes, sir. The Yes, same thing sir. we made ना? Yes, ठीक है, अब देखिए Izan, can you see that all of these are 90 degrees में, Yes, sir. है ना? बस actually I mean 2D का problem था, जब 3D में मॉडल देखिएगा so it will be all the three ones, all the these three are what? All these three are 90 degree. ठीक है, if I want to annotate, see, this is also 90 degree, this is also 90 degree, and this one is also 90 degree. Same plane, that is why these are 90 degree. और ठीक है, तो इसको जो होता है ना, this one and this one, these two, these are known as axial, and these three which are in the same plane, इसको हम लोग बोलते हैं equatorial. ठीक है, so you actually have two different types of bonds in the PCl5, not PCl5. In the generic case of AB5, when we have steric number 5 and the sigma bond is 5 and there are 0 lone pairs. Now you understood, all of you understood now? 120 and 90. Yes, sir. ठीक है, now you guys tell me, इतना आपको कम से कम अंदाजा होगा that 90 is nearer than 120, correct? Yes, Yes, sir. sir. I have 90 degree, तो इस तरह से कुछ होगा, 120 में थोड़ा दूर होंगे. So obviously the 90 degree, just a second. Obviously the 90 degree bond angles will be having more repulsion between them, correct है? Because these are Yes, sir. nearby, there will be more repulsion. So we will be considering 90 only, we will not be considering one. थोड़ा यहाँ पे एक चीज देखते हैं,
So we'll say that first of all, there are two types of bonds. एक होता है एक्सियल एंड दूसरा है क्या, इक्विटोरियल. Equatorial. अच्छा, also one more thing, axial, right now we have bonds, but these are also known as axial positions. ठीक है, we can also call it axial position and equatorial position. ठीक है. Now, if I look at the axial one, it is having 190-degree bond, another 90-degree bond, and another 90-degree bond. It is having three 90-degree bond pair repulsion. 3 bond pair repulsion. सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बॉन्ड पेयर की जगह ना अभी आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, 3 इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, 3 इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. ठीक है, बिकॉज जो बॉन्ड है अभी वो बाद में लोन पेयर भी हो सकता है. बट इफ आई लुक एट दी आई एम लुकिंग एट वन ऑफ द इक्विटोरियल वंस. ठीक है, हम इस इक्विटोरियल को देखते हैं, इट इज हैविंग 190 डिग्री, अनदर 90 डिग्री, सो इट इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, 2 इलेक्ट्रॉनिक pair repulsions. ये clear है all of you guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. So from here we can see that एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, that axial bond are facing more repulsion. Axial bonds are facing more repulsion. That is why axial bonds are a bit strict. अगर if axial bonds are facing more repulsion मतलब they will be far away. If they are far away, the bond length will increase. Correct, guys? Yes, sir. Therefore, axial bonds are longer than equatorial bond. Is this clear? Yes or no? Please tell me. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Lena, what about you? Yes, sir. By the way, just I'm confirming one thing. All of you understand a bit of Hindi, right? If I speak some Hindi here and there. If someone don't understand, please let me know. Okay, sir. सबको आता है ना थोड़ा थोड़ा? Yes, Yes, sir. sir. चलिए ठीक है. Now, after this, we'll write examples. Now, electronic geometry, shape हो गया, bond angle हो गया. You have to write the examples. If you have not written, please write it down. Please write it down. If you are done, raise your hand. I mean, in the Zoom, you will raise your hand. If you're done, Izan, आपका तो कैमरा तो ऑन है, कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन. Yes, Izan, what happened? Sir, there is no camera in my computer. कैमरा क्यों ऑन कर लिया आपने? फिर कोई कैमरा नहीं है तो? कैमरा नहीं रहने से लेकिन एक्सेस मतलब जूम डिटेक्ट नहीं करता ना. हाउ इज जूम डिटेक्टिंग देन? No, sir, like there is camera attached, but the camera doesn't work. It's like broken. ये आपका ठीक. Raise your hand once you're done. Rishta, you're still writing? No, sir. I Keep raised your my hand hand up. and नहीं, you raise your hand. I will ask you guys to lower your hand. फिर कैसे पता चलेगा? हम इंतजार ही करते रह जाएंगे फिर, है ना? इल्हाम and Izan waiting for you guys. खदीजा, आपको समझ में आ रहा है?
जी खदीजा, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, everyone is, अच्छा, Khadija is also here. Okay. Izan, you are still writing? Yes, No, Izan? sir, completed. Completed, ठीक है. So you can. अच्छा, एक चीज तो हमने इसमें लिखनी भूल गए हम लोग, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया. अगर आपके पास स्पेस है तो प्लीज जरा यहाँ पे ये लिख दें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? SP3D. sp3d, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d. मुझे लगा तो कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है. ठीक है गाइस, सी नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल में ये ध्यान रखिए, you have what? You have A and there will be 5 bonds like this. B, 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 B and B. चलिए. So how many valence electron in A? बताइए. 5. 5. Very good. And B की valency क्या होगी? Valency of B will be 1. 1. So valence. अच्छा, आमना नहीं है क्या? आमना नहीं आई है आज. आमना डिड कनेक्ट, क्या हो गया? वो डिस्कनेक्ट हो गई फिर. ठीक है. A is 5. Tell me some example. What atoms will have 5 valence electron? Nitrogen. Rishita, keep your mic on. Once you speak ना, फिर respond करें, फिर आप फिर बोलिए. Keep your mic on. Nitrogen. Nitrogen, ठीक है. Fine. Nitrogen, it has 5 valence electron, but there is a trick with in nitrogen. Can nitrogen have 5 bonds? सोचिए जरा. No, sir. Why? Because nitrogen is in second period, and it can have maximum of 8 electrons, right? That is why we will not take nitrogen. Yes. क्या लेंगे? नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है बताइए? Phosphorus, Yes, sir. arsenic, right? And don't go below this, because if you go below this, then antimony, bismuth, all of these are going to be metals. So the metals को हम लोग नहीं देख रहे हैं, because we are talking about covalent bond. Covalent bond is made by non-metals only. ठीक है? So we'll be generally talking about the non-metals. And B is 1. So एक example हम हमेशा बोलेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन को ले लिया कीजिए generally. Have fluorine and chlorine when you have large molecules like this. So there are 2 examples that you can write here. You can have PF5, you can have PCl5, you can have AsF5, you can have AsCl5. This may be unstable, I can't say right now. आप example के तौर पे कम से कम इन तीनों को तो लिख लीजिए. Why I'm saying that AsCl5 will can no ठीक रहेगा. It will not be very it will not be unstable. It will be fine. Because AS is also having a large size, na? No problem. So you can write at least these examples. Please write this down. Let me know once you're done. Acha. Izan, you must have had problems here, right? How people are telling that phosphorus is having 5 valence electron or nitrogen is having 5 valence electron. No, sir, you told me on the first day itself, right? Like how to get it. Oh, अच्छा, हमने करा दिया था वो ग्रुप नंबर वाला. Yes. अच्छा, हाँ, तब तो ठीक है. फिर आपने याद किया? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, वेरी गुड. तब तो आसान है फिर आपके लिए, है ना? ठीक. Okay. Now, so obviously there will be some questions like all the bonds in PCl5 are not same. Explain. There are 2 types of bond in PCl5: axial bonds and equatorial bonds. Axial bonds are longer because there are more repulsion. याद समझाएं? कर लेंगे ना ये सारे सवाल? बोलो. Yes, sir. कि जैसे लिखाना नहीं पड़ेगा ना जी. अरे हाँ ना, ऋषिता कुछ तो रिस्पॉन्स नहीं देती. ऋषिता बस देखते हैं. हाँ ना, कुछ तो Yes. बोले. सर तो हिलाए कम से कम. कर गाइस. लीना भी बस देखते रहती है. मास्टर पढ़ा ले हमको, ठीक है ना? ज्यादा सवाल मत कर, पढ़ा. अरे कुछ तो हाँ ना रिस्पॉन्स तो दो आप. हाँ ना, कुछ नहीं. यस लीना. हाँ. हाँ, अच्छा, बस इतना ही रिस्पॉन्स है. अब आगे पढ़ाओ हमको. हाँ बोल दिया हमने, काफी है मेरे लिए, है ना लीना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जरा देखिए, we'll have steric number 5 only, but we'll have case 2.
बताइए केस 2 क्या हो जाएगा? 5 sigma plus 1 LP. 5 नहीं रे भाई, 4 सिग्मा होगा ना फिर। 4 sigma. 4 + 1 5, स्टेरिक नंबर तो हम लोग को 5 ही रखना है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा अभी भी? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? विल बी स्टिल sp3 D. 3. Now A, अच्छा this will be AB4 with a lone pair. Please don't write C. अरे ऋषिता, आपको लिखने की बहुत हड़बड़ी रहती है ऋषिता, बैठे रहिए शांत से। देखिए अभी ऐसे लिखने से क्या होगा फायदा बताओ तो? एक एक चीज समझ लीजिए, एक बार एक आराम से लिखिए clearly. When we are having sp3d, we will be having the electrons in a similar manner as we had earlier. We have 5 hybrid orbitals. We have to distribute 5 hybrid orbitals around a sphere symmetrically. So we are going to spread them symmetrically like this only. Now here only there will be electrons in hybrid orbitals. What do we have? We have the electrons in hybrid orbitals. So the electronic geometry, if I want to talk about the electronic geometry will be still same thing, that is trigonal bipyramidal. It will be still trigonal bipyramidal. अरे समझ में आ रहा है कि भूल गए सब लोग? याद है ना केस 1 केस 2 केस 3 में electronic geometry does not change because the hybridization is not changing. ठीक है, ध्यान दीजिए। I have to have 4b. But the problem here is all these bonds are not same, है ना? This one is having, Yes, which sir. one is having more repulsion? This axial ones are having more repulsion. If axial one is having more repulsion, उसमें और repulsion करने वाले lone pair को तो नहीं डाल सकते ना? Lone pair का already बहुत repulsion होता है, and axial also has repulsion, right? So उस केस में क्या होगा? There will be huge repulsions, and repulsions bring instability. That is why I will put the lone pairs जहां पे repulsion कम है. We have less repulsion in the equatorial position like this, so I will keep the lone pair here और बाकी के B atoms यहाँ पे आ जाएंगे. If you remember the Vesper theory, lone pair has highest repulsion, then you have lone pair bond pair, and then the lowest repulsion is between bond pair. That is why we have to keep lone pair in the lowest repulsion state possible, that is the equatorial position. Now if you look at this particular shape तो आपको कुछ याद आएगा, हम इसको ना ऐसे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना? When I am talking about shape, I have to look only at, tell me guys क्या? When we look at electronic geometry, we will look at electrons. When we bonds को देखेंगे या फिर surrounding atom को देखेंगे, है ना? ठीक है? Yes. अगर आप bonds या surrounding atom किसी को भी पकड़ो आप, ठीक है? आपने पकड़ा, अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से समझा करो आप बात को, है ना? एंजॉय कीजिए मस्त आराम से, समझने की चीजें हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया, ठीक है? 90 का से रोटेट। कुछ आपको याद आया बचपन की यादें? ऐसा कुछ होता था बचपन में? ऐसा कुछ होता था? हाँ, बस नाम आ गया तो याद करने की जरूरत है, बताइए नाम। सीसो। ऑल यू नो ना, कोई गांव से तो नहीं है जिसको सीसो नहीं पता है? हम गांव में पढ़ाते, गांव में बच्चों ने सीसो नहीं देखा रहता है। सीसो देखा ना सबने? Yes, यस, sir. आकिब, अब्दुल हमीद, इजान, Yes, इल्हाम sir. एंड खदीजा, ठीक है? तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों को, शेप वगैरह, शेप बिल्कुल दिखेगा, बस बना लीजिए यहाँ पे। you don't have to write about the bond angles here. अब आप bond angle को भूल जाइए। bond angle का खेल जो है ना, mainly that is still I mean in the cases if I talk about, it is still the steric number 4, and specifically it is regarding CH4, NH3 and water molecule only. After that you don't have to remember the exact values of bond angle, okay? But here rather I will write one thing: lone pair occupies the equatorial position as there is less repulsion in equatorial position. हमने EP लिख दिया है, आप लोग थोड़े से लिख दीजिएगा equatorial position, ठीक है? चलिए अब आते हैं एग्जांपल पे। Black and right. हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, आप लिखिए आराम से, लिखिए एग्जांपल लिखिए आराम से।
Okay, I think everyone is done writing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देखते हैं, बताइए एग्जाम्पल में क्या होगा. Carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5. 9. फिर से देखिए 4. हाउ मेनी. नहीं, बॉन्ड्स कितने बना रहा है. 4. 4 bonds. और कुछ. हाँ, 4 तो बॉन्ड्स बनाने, यानी कि 4 तो होंगे ही होंगे, राइट. 1 lone pair. और Yes, sir. और कितने लोन पेयर हैं. 1, 1. उसमें कितने 1 लोन पेयर हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. 2. 2 electrons. तो कितने हो गए टोटल. 6 ना. Yes, sir. समझ में आया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विल बी 6. Izan, you got this? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Valency of B 1. तो 6 में आपके पास एग्जांपल ऑक्सीजन का मत लीजिएगा. ओके गाइस, प्लीज डोंट टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन अगर यहाँ पे देखें आप ना, तो A is having how many electrons. 2, तो 4, 2 6, 2 8 and 10 electrons it is having, right? A is having 10 electrons and oxygen cannot have 10 electrons because it is in the second period. In the second period we can have only maximum of 8 electrons. ये आपको बात 10th क्लास से भी पता है. 2, 8, 18, 18, 32 अगर आपको पता है, तो सेकेंड शेल में हम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ओके, सो ऑक्सीजन कैन नॉट हैव, वी विल हैव सल्फर रादर. सल्फर लेंगे, इसमें सेलेनियम आएगा तो मेटल हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक सेलेनियम. सो स्टॉप एट सल्फर एंड यू कैन राइट हियर फ्लोरीन, फ्लोरीन, समथिंग लाइक दिस, फ्लोरीन और फ्लोरीन. देयर इज एग्जांपल इन योर बुक दैट इज गिवन व्हिच इज SF4. Okay, so please write SF4. You don't need to remember many examples here. आपको concept समझ में आ गया. I'm not even taking the cases of double bond and triple bonds here. I'm only having single bonds. You don't have to worry about the other things here. ठीक है? And if you want, कुछ और समझ सकता है, कुछ और double bond, double bond. एक double bond में करके, एक double bond वाला example I think we can have. Second. Sir, can you explain like valence Uh-huh. electron of A? Yeah, sure. See, A is having 4 bonds. ठीक है? Keep your mic on. A is having 4 bonds, right? Yes, sir. So each bond will be made by one electron of A, the other electron of B. Electron Yes, of A, another. So A is having at least 4 electrons in the valence shell, है ना? Yes. Yes, sir. ये lone pair भी तो A का ही है ना? Lone pair is also of A, so 2 electrons here. So 4 plus 2 will be 6. Got it? Okay. Yes, sir. है ना? ठीक है. Guys, you can write one more example. अगर आप देखिए जरा इस तरह से. For example, if you have A, B, C, D को हम लिख दे रहे हैं फिर से एक बार. You have something like this. A with double bond some D atom, double bond some another D atom, and single bond B atom and B atom. And here you have lone pair electrons. ठीक है? So if you see the valence electron of A right now Sir, is equal to, हाँ जी बताएं. how we got double bond? आपको अगर याद हो, then we did this in the previous class also. We can have double bonds also ना. Double bond को भी तो single bond treat करते हैं VSEPR theory. Yes, sir. याद आया? याद आया? Yes, sir. है ना? तो अगर right now if you want to have the valence electron of A, एक चीज हम आपको बता देते हैं. valence electron of A अगर आपको देखना है ना, so you have number of bonds. 8. Bonds plus lone pair electrons. So we have how many bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 2. 8 electrons. ठीक है? तो 8 electrons में आपके पास एग्जांपल आएगा किसका? xenon का, है ना? Group 18. Group 18 is xenon. So xenon makes some compounds. Xenon का आपको याद रखना है. And then if you would talk about valency of D. So since D is making 2 bonds, so valency of D will be 2. And the valency of D, it is 2. For non-metals, it will be for oxygen. जब भी valency D आ जाए, तो मतलब 2 आ जाए, divalent, then it will be always oxygen, है ना? ये चीज हमने कुछ याद कराया था आप लोगों को. And similarly, valency of B will be
one, which will be fluorine you can take, and the example that you can make from here, it is XeO2F2. ठीक है? I think this is the example I gave in the valence. पर एक सेकंड, स्टेरिक नंबर मैंने शायद ये दिया था आप लोगों को, दिया था अगले दिन XeO2F2, हाँ XeO2F2 दिया था ना, sp3d, हाँ ठीक है, ठीक है. So write these two examples. All of you done yes or no, please tell me. No, देख sir. लिया? No, sir. Izan, you understood this one? Yes, sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया? Yes, sir. Okay. We will have case 3. In case 3, tell me क्या होगा? Pattern देख के थोड़ा बताएं. If you can recognize the pattern, tell me what will be 3 the case sigma 3. bond, 3 2 sigma lone plus pair. 2 lone pair. 3 sigma plus 2 lone pair ना? हाँ, Yes, sir. ठीक है, चलिए लिखें. Hybridization, tell me guys, hybridization. sp3. है ना? Hybridization will be same only ना, क्योंकि स्टेक नंबर 5 है. We will have the electronic geometry भी same उसी तरह से ही रहेगा. ठीक है? So electronic geometry, it is still what? The same thing, that is trigonal bipyramidal. Now I have to put what? I have to put the lone pairs. Now I will put the lone pairs a bit symmetrically, है ना? ऐसा मतलब इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बहुत अजीब दिखेगा ना, symmetrical नहीं लगेगा. That is why I will keep the I will keep the lone pair electrons like this. ठीक है? Then I will put. अच्छा, एक और चीज, why I am putting in the equatorial, I hope you remember the reason, that it is having lower repulsion. That is why I am still putting the lone pair on the equatorial position. ठीक है? Now you can Yes. see A क्या shape हो जाएगा, बताइए जरा. T. क्या shape हो? हाँ, T shape, बस यही नाम है इसका, T shape. ठीक है, इसमें इतना ही है आपके पास. नाउ वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस हियर, वी विल जस्ट डू सम एग्जांपल्स. ठीक है? सो एग्जांपल्स में बताएं. If I take this one only, if I'm not going to talk about the valence, sorry, if I'm not going to talk about the double bonds, if I have only single bonds, then tell me guys, valence electron of A 5. is equal Sir, to how please much? can repeat again what you said. Valence electron of A, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसमें और कुछ और नहीं है. I mean, I don't have to add anything. I don't have to add bond angle. I don't have to add any another pointer. So I am directly going towards the example. Valence electron of A कितना हो जाएगा? 7. 7. 7. 4 plus 3. ईजान समझ में आया? 7. Yes, sir. लीना आके को समझ में आया? अब्दुल हमीद आपको समझ में आया? हाँ, इल्हाम को समझ में आया कि नहीं आया? इल्हाम नहीं थी लास्ट क्लास में, नहीं आ रहा ना इल्हाम को कुछ भी? सर के ऊपर जा रहा है ऐसे, नहीं आ रहा ना समझ में? देखिए, माइक ऑन कीजिए. Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को समझ में तो आ रहा है, ये तो पता चल रहा होगा आपको, राइट? समझ इल्हाम में आ रहा है, but valence electron of A. ये नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझिए जरा. अभी तो हम समझा रहे थे एग्जाम, तो आपको समझना चाहिए था. ठीक है, प्लीज. Sir, it's bond plus lone pair electron. हाँ, बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सो हाउ मेनी बॉन्ड्स बताइए? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर हियर? 4 कैसे है भाई? देखो ध्यान से. 5. 5 कहाँ 5 है यार? बॉन्ड तो एटम के साथ बनेगा ना. ठीक से Yes, sir. देखो कितने हैं? 3. एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. हाँ, तो 3 plus 4 will be 7. ठीक है? So what will be 7? Tell me some atoms whose valency is 7. Valence electron are 7, my bad. Whose valence electron are 7, and valency of B is equal to 1. So basically हम लोग फ्लोरीन में से कुछ लेंगे, अभी देखते हैं. Tell me guys, valence electron is 7.
हाँ बोलो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. So can we take chlorine again? हाँ, here we can Like- take क्लोरीन, ब्रोमीन ले सकते हैं. ठीक है. There is no other atom here. Also, the example that we are going to have is ClF3. ClF3. Okay. Similarly, if I am going to take a double bond, चलिए ठीक है ना, अभी इसी में हम एक डबल बॉन्ड बना देते हैं. आप इस, you don't change the structure, ठीक है? You don't change the structure. I am making a double bond here, and I am getting this B as D. इसको हम D कर देते हैं. एक सेकंड. डबल बॉन्ड अगर करना होगा ना, डबल बॉन्ड भी हम लोग यहाँ पे करेंगे इन दी इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो D यहाँ पे. ठीक है. अब बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ A कितना हो जाएगा इसके लिए? 8. बोलो भाई, बोलो. आप लिखना बंद करिए, बोलिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ A कितना हो जाएगा? 8. sir. 8. So atom will be xenon. Yes, sir. और D क्या होगा? D की वैलेंसी 2 हो जाएगी, so it will be oxygen, Okay. right? So I can have a example in which we have XeOF2. बन रहा example? Yes or no? Please tell me, guys. Sir, how come Yes, F2 sir. came? How what came? Akib? How come F2 came? मतलब ये तो B तो सेम ही है ना पहले से ही. हाँ, तो हमने okay. B को दोबारा नहीं लिखा है ना. ठीक है. Okay. थोड़ा ठीक है, बताना चाहिए था लेकिन नहीं. ठीक है, अगले बार से आप भी रेडी रहिएगा ना, आगे एक स्टेप. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. सो वंस वी हैव गॉट xenon, xenon से आगे तो हम लोग जा ही नहीं सकते है ना. अब भले ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, now you will have valence electron 9, so there is no atom which will have valence electron 9, right? ग्रुप नंबर वैसा रहेगा ही नहीं किसी का. ओके. सो आफ्टर xenon we will stop the exam. खत्म. अब इसमें डबल बॉन्ड करके कोई फायदा नहीं. कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. अब क्या जाएगा? केस इसी में. Here we have case 3, next is case 4. स्टेरिक नंबर है 5, केसेस हैं 4. Case 4. बताइए, सिग्मा कितना? 2 How many sigma, sigma? Plus 3 lone lone pair. pair. 2 sigma प्लस 3 लोन पेयर. आप बताइए, ऐसा है ना बिल्कुल कि आप पढ़ा दें जाके. Am I right? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. है कि नहीं? बैठा के पढ़ा दीजिए किसी को. ठीक है. चलिए. Now in this case, hybridization sp3d. The electronic geometry will be still the same because we are having 5 hybrid orbitals which have to be spread in a spherical atom. So we will spread it in a trigonal bipyramidal geometry. So the geometry will be again PBP. Now, here we will have AB2 na, because here we are having 2 sigma bond. There will be Yes, only yes. 2 surrounding atoms. Okay. Now we will keep 3 lone pairs where we are going to keep the 3 lone pairs in the equatorial positions. And we will have the atom B here. We will have the atom B here. So molecular shape कौन बताएगा? बताइए. Molecular shape. Linear. Very good. देखिए आप लोग खुद से दिखने लगा. Linear दिख रहा है सबको? एक लाइन में ना सारी चीजें. All of these are in a line, so it will be linear. Examples में. चलिए, tell me example. एक को क्या ले सकते हैं अभी के केस में? सीधा बताइए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह को छोड़ के. चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दीजिए. A का. What will be the valence electron of A? 8. Very good. 8 ना. ठीक है. तो यानी कि xenon. और B क्या हो जाएगा बताइए? B will be anything Fluorine. chlorine वगैरह. Fluorine. Fluorine ही लीजिए. 1. हाँ, B1 होगा. I mean the valency will be 1. We will take the atoms. Valency will be 1. It's correct, Isam. And we will take fluorine. Xenon makes the molecules only with oxygen and fluorine. ठीक है ना? ये याद रखिए तो आपको examples याद रह जाएंगे फिर. So what we can have as an example, we can have XeF2. सही है? हो गया? We can't make double bond in this. हाँ, डबल. इससे आगे तो जा भी नहीं सकते.
है ना, Sir. because we already have valency 8 ना. If you are going to put up a double bond, then the valency will be 9. So group 19 तो है नहीं, group 18 तक ही खत्म. We will not have anything else. XEF2. Please write this down. Since it is linear, the angle अगर आपको लिखना है तो आप bond angle यहाँ पे लिख सकते हैं. Bond angle will be 180 degree. खदीजा समझ में आ रहा है आपको? पक्का? यस खदीजा, हाँ आ रहा है ना? आपके आंसर्स नहीं आ रहे असल में. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग कि ओके वैलेंसी विल बी 8, xenon, fluorine. You are not even saying sp3d when I am asking about hybridization. Yes खदीजा, बोलिए ना, माइक ऑन करके थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए. ठीक है, ठीक है. मुंडी ला रहे बस वो बच्चे. चलिए, we'll have the next static number 6. ठीक है, so case 4 खत्म. इसके बाद if you are going to have one sigma bond, if you are going to have one sigma bond, तो वहां पे you don't have any confusion regarding the shape. अगर आपके पास एक bond है, so this will always be linear. M, molecular shape. M is molecular shape. Got it, Izan? Yes, sir. ठीक है. See next we have this steric number 6. Steric number 6. In this we'll have the case 1. Steric number 6 के ना ब्रैकेट में से हम लोग लिख सकते हैं. What will be the hybridization here? In all the cases it will be sp3d 2. 2. Case 1 में please write. Tell me case 1 बताइए. Case 1 क्या हो जाएगा? 6 sigma plus bond 0 lone. and 0 lone pair. Very good. 0 lone pair. ठीक है, 0 lone pair. The case will be AB6. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कुछ लिखने की जरूरत आपको है नहीं. अगेन हमने लिया एक स्फीयर. ठीक है, we will have मतलब अच्छे से दिखाने के लिए एक इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे जो कि आपको दिखाएगा ओके दिस इज अ स्फीयर. अगेन वी आर गोइंग टू टेक एक ऊपर एक नीचे तो रहेगा ही रहेगा. सही है. ठीक है, देन आप एक ऐसा मान सकते हैं. 2 हो गए, अब ये हो गए कितने? 4 हो गए. और ऐसे ही एक अक्रॉस इधर से रहेगा. ठीक है गाइस, Yes, sir. सही है ना? अब सुनिए Yes, जरा, sir. देखिए दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा, Yes, sir. है ना? ये भी 90. अच्छा आप लोग रुकिए जरा, एक चीज दिखाते हैं आप लोग. जस्ट अ सेकंड. कैन ऑल जस्ट, ये तो इतना ज्यादा सेटअप हो जाता ना ऑनलाइन में, क्या ही बताया. बैलून नहीं दिख रहा होगा, लेट मी अनब्लर माय थिंग. ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को बैलून? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब समझिए इसमें है 6. ठीक है ना? इफ यू गाइस कैन सी, यू कैन सी 1 2 3 4. 4 दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एक इधर है 5 छोटा सा.
ठीक है, ये छोटा हो गया, डिफ्लेट हो गया, इट वाज बिग बट इट हैज बिकम स्मॉल, और ये 6th है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए जरा साइड के एंगल से, पता नहीं कितना नहीं, कैन यू सी द सेम शेप हियर आल्सो? अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इफ Yes, दिस sir. येलो वन इज अ बिट लार्जर, है ना, तो ये Yes, ऊपर sir. नीचे, देन वी हैव समथिंग हियर, ठीक है, एक अंदर जा रहा है, एंड देन वी हैव समथिंग हियर बाहर, ठीक है। सो दिस, अच्छा एक चीज बताइए, दिस ब्लू वन इज एट द टॉप, यू कैन सी द शेप, है ना? अब देखिए हम Yes, एक sir. ऑरेंज को टॉप में लेंगे, ना ऑरेंज वन इज इन द टॉप, बट आई थिंक यू कैन नॉट फिगर आउट कि शेप कुछ चेंज हुआ है, शेप इज स्टिल द सेम, Yes, sir. है ना? नाउ यू सी हियर, Yes, sir. this blue one, it is in the side, ऊपर नहीं है ये, this is in the side, can all of you see that? Sorry, अगर sir. इसको हम, this blue one here, ये जो हम blue वाला पकड़ रहे हैं ना, ये वाला, Yes, this sir. blue one, this blue one, it is in the side, if I bring it to top, shape is still the same, but आपको ये थोड़ा सा येलो वाला इमेजिन करना पड़ेगा, बड़ा है, येलो वाला थोड़ा छोटा हो गया बस, है ना? Shape Yes, is sir. still the same. What I want to say is all these balloons are what? Same. This structure, it is completely symmetrical. Here we don't have any two different bond angles. सारे में bond angle 90, 90, सब जगह 90. Honestly, so this, yes or no? Okay. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से पता है, आप सब बना सकते हैं, टाइम मिलेगा ना अभी आपको बना के हम, you can have imagination of this complete balloon thing only. आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फुलाइए उसको balloon को, and then you stick two things together, two of the balloons together, you will get linear. You stick 3 together, you will get trigonal planar. You stick 4, you will get tetrahedral. ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग. So this is the, तो थोड़ा हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आता. I will write it like this, है ना, A B C D करके लिख देते हैं. A, I have 1 2 3 4 5 6, ठीक है. Now let us see what is the geometry here. Geometry क्या होगी? I will join these things. ठीक है. Can you see a one face here? ऐसे करके एक Yes, face sir. बन गया, ठीक है. Yes, sir. Can you see another face? ये वाला. Can you Yes, see sir. two Yes, face sir. now? अब देखिए जरा ध्यान से, अब आपको क्या दिखा, 4 फेस बन गए. देखिए 4 फेस दिख गए, एक तो पीछे की तरफ है ये वाला, एक इस साइड की तरफ है, एक आगे की तरफ है. कैन यू सी द 4 फेसेस? Yes, sir. Yes, sir. दिखा ना? Yes, sir. One is behind, one is facing towards you, one is right, one is left. ठीक है ना? So in the above we have 4 faces, below also we will have similarly 4 faces, correct? Yes, sir. ठीक है. 4 4 8 हो गए. 8 का मतलब, 8 का वर्ड में बताइए क्या होगा? 8 को वर्ड में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे 8 को? जैसे 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, ठीक है ना? Octa. ऑक्टा, वेरी गुड. ऑक्टा. इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, आप खुद बोल रहे हैं नाम, ऑक्टा. और फेस को क्या बोलते हैं, थोड़ा याद हो अगर आपको तो? Hedral. फेस हेड्रल, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टा हेड्रल. याद आया? ऑक्टा, Yes, sir. ठीक है. Now obviously the molecular shape here also, because we are going to put B atoms, there will be 6 B atoms which will be here. So the molecular shape will also be the same. That will be octahedral. ठीक है. All the bond angles in this case will be 90 degree. Bond 90 degree. ठीक है. चलिए. Now बताइए A की वैलेंसी क्या ले लें? What will be the valency of A? Valency will be 2. Oh my God, my bad. Valence electron, not valence. My bad. Valence electron Six. कितना हो जाएगा? 6. 6. We will have sulfur. हाँ ठीक. Sulfur 6 का सल्फर होगा ना? ठीक है.
और B की वैलेंसी होगी 1, सो वी कैन हैव फ्लोरीन एटसेट्रा। यहाँ से आपको एग्जांपल मिल जाएगा SF6 का, व्हिच इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट यू हैव टू रिमेंबर। याद रहेगा? Yes, sir. ओके। चलिए, अगर हम डबल बॉन्ड कर लें, ठीक है, द एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ डबल बॉन्ड, तो बताइए क्या आ जाएगा? A will have how many valence electron? 8. 8 देखिए 7. जरा फिर से 7 ना, 7. एक बॉन्ड बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ ले सकते हैं, ब्रोमीन लीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज ब्रोमीन इज बिगर, वी हैव टू हैव 5 एटम्स अराउंड इट ना, तो कुछ छोटी चीज लेंगे, so you cannot have many things around it. If you will take a bromine larger atom, there will be many atoms around it. So we can have B as fluorine again, B which will be 1. We'll take fluorine और आपके पास एग्जांपल आ जाएगा इस केस। What happened to me? Just a second. From this we can have example of BrF5. Down. चलिए खुद से कीजिए, केस 2 कीजिएगा खुद से आप लोग। केस 2 के एग्जाम मॉलिक्यूलर शेप छोड़ दीजिएगा, आई विल टेल द मॉलिक्यूलर शेप, बट एटलीस्ट यू कैन राइट द एग्जांपल्स एंड ऑल। क्या ख्याल है? You can Okay, try. sir. केस 2 Okay. है ना, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, you will be having AB 5, A will be having a lone pair electron, ठीक है। चलिए एटलीस्ट राइट द एग्जांपल्स है ना, AB में कितने होंगे नहीं होंगे वैसे करके तो आइडिया लगाइए, जब तक आई विल ट्राई टू inflate some balloons and show you guys all the shapes, है ना। चलिए आप लोग कीजिए जब तक।
Guys, you will send me once you are done. Okay, you will tell me. Case 2 में नहीं. No, Rishita. I don't think so. Okay. BRF5 तो sorry. Yes, Rishita, your answer is right. Correct. Okay, sir. Guys, there is one mistake from my side. Okay, one mistake from my side. Please see. This D will be now D ना. तो एक तो D होगा आपके पास, which will be having two valency, which will be oxygen. So rather than BRF5, we will be having BROF5. ठीक है? XE नहीं आएगा इजान. I don't think so. ठीक है, तो 2 मिलूंगा अभी. Wait a second, guys. Let me see. Case 2, here will be having A 1 2 3. नहीं अच्छे से बना दे. गड़बड़ नहीं. A ठीक है. ओह माय बैड. क्या ही बना रहे हैं. You're having sp3 ना, so you'll have 1 2 3 4 5 and 6. So electronic geometry is same, that is octahedral. I will keep the lone pair actually here, and I will keep the B atoms here, and here. So the molecular shape will be, molecular shape लिख लीजिएगा square pyramidal. Sorry, square pyramidal, not linear, pyramidal. ठीक है, so you'll have square like this, and the pyramid will be like this. ठीक है ना? I hope you can see the square pyramidal shape here. Square pyramidal. ठीक है? Sir, but I Now, thought we couldn't put it on the axial bonds because they are more repulsive. नहीं Yes, sir. ऋषिता, axial equatorial है ही नहीं यहाँ. बताया था ना अभी, तो वही चीज वही समझा रहे थे हम. All of them are same. ठीक है ना ऋषिता? ठीक है, please see. Yes, sir. Next is, Sir, how come all of them are same? sorry, How come all of them are same? why not they will be same? क्या फर्क है सब में? Sir, it will be axial, right? B, the straight one. सारे तो 90 डिग्री वाले हैं, तो कैसे अलग हो जाएंगे बताइए? चलिए वो भी दिखा दे आपको. चलिए देखिए, उसको भी देख लीजिए जरा. Yes, understood, sir. पक्का देखा Yes, नहीं है? yes, sir. No. ठीक है. यहाँ पे अगर हम A की बात करें, so A will be having 5 6 7. B will be 1. So BRF5, Rishita, your answer was correct. And if you are making a double bond, maybe, ठीक है ना, अगर हम double bond वाला केस ले लें, so A will be having 8, और एक D atom होगा, that will be having 2 valency. B atom कभी भी 1 होगा. There will be 1 D. एक आपके पास B होंगे 4, कितने टोटल? 5 है ना. So एक आपके पास D होगा, 5 B होंगे. Now xenon, D हो जाएगा ऑक्सीजन, और this will be 4, है ना? ठीक है. तो XeOF4 एक एग्जांपल होगा, अगर समझ में आ रहा So है. case 1 वाला second double bond, what's the example? सॉरी, व्हाट ऋषिता? Case 1 double bond, what's the example, sir? BROF2 हो जाएगा. BROF2 है ना, वहां पे एक मिस्टेक हो गया था. वैसे हमने क्लोरीन को ही ले लिया था सर. BROF5 है, गेस राइट. BROF5 लिखा है ना हमने. हाँ ठीक है, BROF5 चेंज कर दिया था हम. ठीक है, BROF5. Yes, sir. बट एवरीथिंग सही है ना यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 7. हाँ ठीक है. Sir, double bond will always be 2. हाँ, डबल बॉन्ड विल हैव वैलेंसी ऑफ 2 ना. Like, will it always be 2 or will it change? नहीं वो हम समझे
डबल बॉन्ड हमेशा 2 होगा मतलब Like this you are one, writing D is 2 like everywhere. Yeah. that means it is making 2 bonds ना, so Yeah. it will be divalent. उसकी Okay. वैलेंसी 2 होगी, जैसे B की वैलेंसी 1 है हमेशा, Yes, sir. Okay, sir. Got it. क्योंकि वो एक बॉन्ड बना रहा है ना। ठीक है, अच्छा केस 1 में ना आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, लेट अस सपोज वी आर हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा कि A के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, सो दिस विल बी xenon, and D will be still, there are 2 D D atoms, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं इसको, there are 2 D atoms और D की वैलेंसी 2 होगी, this will be oxygen, and we have 4 B atoms which will be having valency of 1, which is fluorine type of atom, so this will be XeO2F4. ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह लिख लीजिए जरा। गाइस लीनियर दिख गया? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. I am adding the third value, okay? Trigonal planar, see, it is in one, अरे एक सेकंड मेरा ब्लर हटा दे, एक सेकंड। See, trigonal planar, all of them are in one plane, है ना? अगर आप इसको ऐसे रखें, देखिए फॉर एग्जांपल इफ आई कीप इट इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में रह जाएगा, अरे भाई उड़ा, है ना? ट्राइगोनल Yes. प्लेनर, ठीक है। अब केस 3 कीजिए, तब तक हम आगे का बनाते हैं बैलून। Sir, आप लोग what केस will be the bond angle of case 2? बॉन्ड एंगल ना केस 2 का मतलब 90 से कुछ उल्टा सीधा होगा, आगे पीछे डिस्टॉर्टेड होगा थोड़ा ना, it will not exactly 90 degree, but it will be somewhere from 90 degree, away from 90 degree, okay? But you don't have to remember the exact values of the bond angles after steric number 4, ठीक है? Okay, sir. चलिए केस 3 कीजिए आप लोग, जब तक हम बैलून को फुलाते हैं। Have 4 sigma plus 2 lone pair, AB 4 और 2 lone pairs के साथ, ठीक है? ठीक है। Sir, where is the double bond in case 2? डबल बॉन्ड आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ऑल द एंगल्स आर सेम हियर ना, हमने बनाया नहीं है, बट ए डबल बॉन्ड बी, सॉरी डबल बॉन्ड डी होगा, माय बैड, एंड यू कैन हैव हियर बी 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 और बी, और ऐसे एक यहाँ पे लोन पेयर। Okay, sir. कीजिए गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस।
करते रहिए आप लोग केस 3 4 सिग्मा तो होंगे ना ऋषिता, 4 सराउंडिंग आइटम्स तो होने चाहिए। हड़बड़ी Yes. क्यों है आपको? Five and last balloon is the sixth one. Okay. Guys, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज सी आई हैव इन्फ्लेटेड माय बलून्स, है ना? इधर आ जाइए आप। हियर देन सो ये अच्छा किसी ने आंसर वगैरह भेजा है क्या? नो, फाइन। सो आई विल स्टिल हैव ए 1 2 3 4 हियर एंड हियर। एग्जाम से है, वेरी गुड, करेक्ट है एग्जाम। ठीक है, सो विल हैव 2 लोन पेयर्स हियर, करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अभी भी इट विल बी octahedral. If I talk about B, so there are 4 B's, so B, 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 and B. If I look at this particular thing, it is square planar, right? This is in one plane, all of these things. It is making a square, so that is why the molecular shape is square planar. If I talk about A is having how many valence electron? 4 bonds plus 4 lone pair electrons, so it will be 8, which will give me xenon. And if I talk about B, has a valency of 1, which will be fluorine. So I have 4 B atoms, so I can have XeF4. Yes, sir. ठीक है, चलिए। अरे बहुत पढ़ाई कर ली, छोड़े हटाओ, इधर आ जाओ। देखिए कहां तक पहुंचे? टेल मी गाइस, वेयर आर वी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन गया? pyramid. Triangle pyramid. टेट्राहेड्रल। अगर देखो आप, देखिए टेट्राहेड्रल बना। अब देखिए टेट्राहेड्रल के बारे में खास बात देखिए। The amazing thing about tetrahedral structure is, which atom is above right now? Tell me. White. Bolo white. Which White, atom is white. above? White. Now you see the shape. I am putting the blue atom above. बिल्कुल वही शेप है। Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. Yes. अब हम अगर येलो को ऊपर रख दें, बिल्कुल वही शेप है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब चलिए अगले में आते हैं। 5 में
डर लगता है बलून से फटफट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर हम कर सकते हैं क्या? कैन बेहतर इट मेकिंग इट लाइक दिस। ठीक है, चलिए। ब्लू एंड ब्लू आर अबव एंड बिलो, सो ब्लू क्या हो गया? एक्सियल। देखिए, दिख रहा है Yes, आपको? sir. ये तीनों एक प्लेन में हो, ये येलो वाला एक प्लेन में, व्हाइट वाला एक। रुको थोड़ा इसको एक दो बार और फोल्ड करते हैं। एक ब्लू के चक्कर में बाकी ना निकल जाए मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए। See here guys, blue are the axial, yellow and white are what? In the equatorial positions. दिख रहा है सबको? Can all of you Yes, see sir. this? ठीक। Yes, sir. अब देखिए how these axial ones are different, है ना? You see the shape right now. If we were doing anything with the tetrahedral one, अगर इसके ऊपर शेप कुछ नहीं हो रहा था, but if I am going to keep this right now, अलग शेप लग नहीं रहा है कुछ आपको। देखिए येलो के नीचे कुछ है, do we have anything? See, completely change ना। अगर आप Yes, देखिए sir. अभी ब्लू के नीचे क्या था? ब्लू था, but as soon as I try to keep the yellow one above, there is nothing behind, exactly behind yellow कोई नहीं है। That is why these blue will be always axial, they are not going to, मतलब ये हमेशा axial, that means they are different। ठीक है, now I have to put the last one। I hope कोई बलून निकल ना जाए बस यहाँ से। चलो हो गया। Now I hope now you can see the octahedral shape, एक ऊपर एक नीचे। Can you see 4 atoms in the plane? Yes, sir. Yes, दिख रहा है सबको? अब देखिए now all of these atoms are very similar, एक ऊपर एक नीचे 4 प्लेन में, है ना? What is the configuration? 1 above, 1 below and 4 in the plane। अब white one is in the above, अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। अभी भी देखिए एक ऊपर एक नीचे 4 प्लेन में। Can you guys see this? All of these are same। Yes, sir. Yeah, you want to try something else? You want to try some blue one? Blue को ऊपर कर दिया, एक ऊपर एक नीचे एंड 4 प्लेन। दिख गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. क्लास में आप लोग होते एक एक बैलून हम आपको पढ़ाते हैं। लीजिए फ्रॉम माय, कैच कर लीजिए सबको। मिल गया सबको बैलून? हम मेरे क्लासरूम में आते हैं, लोगों को लगता है बर्थडे पार्टी देते हैं। ओके, सो सर व्हाट इफ यू कीप व्हाइट अप? लो भाई, एक ऊपर एक नीचे 4 प्लेन में अभी भी। ईजान Okay, sir. Got it. गॉट इट। इसको भी देख, ये वाला व्हाइट भी देख लो, एक ऊपर एक नीचे बाकी सब। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। एक चीज आपको ना हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आए। ठीक है, आई मीन दिस वाज वेरी क्रूशियल इफ यू had solid state in the 12th standard, but since you don't have solid state in the 12th standard, the important नहीं will be। खूबसूरती देखिएगा इस चीज की तरफ ध्यान से।
This octahedral it is also made up of 3 triangles kind of thing. ठीक है, एक तो हम पोजीशन ये है, इसको ऐसे करके फिक्स कर सकते हैं, सही है, ऐसे करके हम खड़ा रखने की कोशिश करें। एक ये है, आप देखो अगर these are the 3, 1 2 3, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? These 3 triangles Yes, are in one sir. plane, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपकी तरफ हम लेके चल रहे हैं। You see this balloons which are facing you, blue and yellow, all of these three are facing you. Yes, sir. They are making a upward triangle. अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, this point and this point, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, एक अपवर्ड ट्रायंगल बना। Yes, sir. Yes, sir. और आप ज्वाइन पकड़ी इस वाले को, येलो वाले को, ये वाला पीछे वाला येलो, ये पीछे वाला व्हाइट, ठीक है, और एक ये नीचे वाली, एक उल्टा ट्रायंगल बन के दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, आई मीन दिस पर्टिकुलर जो नजरिया है देखने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th स्टैंडर्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, जेई के लिए या नीट के लिए। दैट ऑक्टाहेड्रल इट इज आल्सो मेड ऑफ विद एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, अपवर्ड ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल। अपवर्ड ट्रायंगल आपकी तरफ, डाउनवर्ड ट्रायंगल हमारे तरफ, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट केस, है ना? इसके आगे तो और कोई केस हो नहीं सकता, बिकॉज वी हैव xenon ऑलरेडी, right? So we cannot have any other cases over here. We cannot have any other double bonds also, because we cannot have anything more than 8 electrons. Someone message me right now? No, sir. Okay, fine. ठीक है. This is from another class. Sorry. चलिए. So all of you understood till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. तो आई थिंक टाइम इज ऑल्सो ओवर, और आपका आज का क्लास जो है इतना ही कंटेंट था। यू कैन नाउ अटेम्प्ट द असेसमेंट। कैन यू प्लीज गो टू द Learnivio ऐप